Hello friends, welcome to Balkishar Premier Academy, one of the most pioneer institute for GATE, IES and PSU examination. Hello friends, in this video we are going to discuss about the equations of the NMOS transistor. NMOS transistor means the N-channel metal oxide semiconductor FET transistor. So as we know, we have discussed earlier that NMOS के लिए आपका जो substrate होता है, the substrate that is required for the NMOS must be the p-type substrate. So the substrate must be p-type. तभी तो आपके n चैनल बनेंगे, तभी आपका नाम होगा MOS का नाम होंगे N MOS, that is N channel MOS. So now we have already seen the characteristics or the drain characteristics of the MOSFET. So drain characteristics में क्या देखा था हमने? तो this was the drain axis, ID axis, and this is the VDS axis. So यहाँ पे मेरा आएंगे ID वैल्यू और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे ड्रेन टू source potential. So we have seen what will be the curve look like. The curve look like that when the VGS value will be equals to VT, then we have seen that the value will be nearly, the current value will be nearly zero. So that means we can say that ये जो curve आपको मिलेंगे, this is for when the VGS value will be equals to VTH. जब मेरा VGS का value threshold value के साथ same हो जाएंगे, तब आपको current just zero मिलेंगे. So now after that what will happen if we increase the VGS value to some amount, so we will get the curve look like this. So this is the value of ID current versus VDS for some value VGS1. This VGS1 is greater than VTH. Greater than VTH. जैसे ही हमने VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया VTH के बियॉन्ड में, तो मुझे एक कर्व मिलेगा. Similarly, if we increase the VGS value, we will get a curve like this. So this is the value of ID versus VDS when the VGS value is VGS2, which is greater than VGS1. So in this way we will get a curve of another curve. अब इसी तरीके से हम लोग अगर VGS को इंक्रीज करते गए तो मेरा कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, that is VGS3, and this VGS3 is greater than VGS2. So we have seen that there are two region of operation for the NMOS transistor. So NMOS के दो region of operation होंगे. पहला region of operation होता है linear region of operation. So the first operation region is the linear region of operation. Linear region of operation. This linear region of operation में क्या होता है कि आपका जो ID current flow करेंगे from drain to source terminal, that will be linear with respect to the drain to source voltage. So this region is sometimes also called as the triode region. So triode region में आपका condition क्या होगा? So suppose I am considering this graph. So ये graph का जो VDS sat value होंगे, that is the saturation value of the VDS. So VDS sat कौन सा value होता है? This is the value of VDS sat. So VDS sat का मतलब होगा कि VDS sat से ऊपर जब हम लोग वोल्टेज डालेंगे तो हम लोग यहाँ पे ID saturation value पे चला जाएंगे, और VDS sat से नीचे वैल्यू पे मेरा ID करंट VDS के साथ linearly vary करेंगे. So for linear region of operation, the condition should be like this, that the drain to source potential VDS should be less than the VDS saturation value, VDS set. And we know this VDS set, what is the value of VDS set?
We have already derived in the previous video that VDS SAT value was nothing but the gate to source potential minus the threshold potential. So if we put that value, then we'll get that VDS should be less than VGS, the corresponding VGS minus the threshold value. Ab, this is the condition, this will be the condition for the NMOS transistor to operate in the linear region or the triode region. Now as we know this threshold value, ये जो threshold value होते हैं, this threshold value is very small. This threshold value is very small. So if the threshold value is very small, so we can write the above equation as VDS is less than, we can neglect the value of VTH, so it will be only VDS less than VGS. So that means we can say that the drain voltage, the potential at the drain should be less than the potential at the gate. For this condition, what will happen? The NMOS transistor will go into the linear region of operation. That means we can say that the gate potential must be greater than the drain potential. That is, the potential at the gate should be bigger than the potential at the drain terminal. And for this condition, there is a linear relationship of ID versus VDS. So this was the condition. ये क्या था? ये हमारा condition था इन द लीनियर रीजन. तो लीनियर रीजन में ऑपरेशन करने के लिए एनमॉस ट्रांजिस्टर के लिए गेट में मुझे ज्यादा वोल्टेज डालने पड़ेंगे देन द ड्रेन वोल्टेज, तभी ये लीनियर रीजन में जाएंगे. तो लीनियर रीजन में जाएगा तो लीनियर रीजन कौन सा है? लीनियर रीजन आपका ये वाला रीजन आपका लीनियर रीजन है. दिस इज द लीनियर रीजन. सो लीनियर रीजन में जब आप होंगे एनमॉस ट्रांजिस्टर होंगे तो उसके अंदर जो करंट होगा उसका कुछ इक्वेशन होंगे. सो लेट अस सी दैट इक्वेशन. So what will be the equation of ID in triode region of operation? So triode region of operation में मेरा ID current का equation क्या होगा? We have to see that. So for that purpose you can see that ID in the triode region. So the current equation जो होता है ID region, ID current का in the triode region, the current equation looks like this, that ID will be ID is equals to mu n COX W by L, and with that VGS minus VTH उसके साथ drain to source potential minus drain to source potential का square divided by 2. So this is a very important equation regarding the equation of drain current in the triode region. This equation is very much important. It will be needed in the numerical. तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन का डेरिवेशन है. सो इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए बट आपको ये कंक्लूजन चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. सो नाउ ट्रायोड रीजन एग्जिस्ट जो होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द ट्रायोड रीजन जो एग्जिस्ट करते हैं उस कब एग्जिस्ट करता है? जब गेट वोल्टेज ड्रेन वोल्टेज से बड़ा होता है. That means the drain voltage जब small होता है. So if the drain voltage is small, so we can say that for the triode region of operation, so triode region of operation के लिए we have the drain to source potential is very small. If the drain to source potential is very small, then we can say that the VDS, that is the drain to source potential square divided by 2 will be very small, because small का square होंगे और भी small. So we can neglect this term VDS square by 2. So if we neglect that term, then we can write the equation of ID as, so ID will be ID, it will be mu n COX W by L VGS minus VTH into VDS square VDS.
So after neglecting this term, we have got this equation. Now you can see here it is a constant term mu n cox w by L. Since this mu n cox, is generally called the process conductance parameter. So what are they called? These are called the process conductance parameter. Mu n क्या है? The mobility of the electron in the channel, and cox is the oxide capacitance that we have seen in the MOS capacitor. So this is called the conductance process conductance parameter. Process transconductance parameter. Sorry, process transconductance पैरामीटर, इसी को बोलते हैं प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर ऑफ द एनमॉस ट्रांजिस्टर, जिसका यूनिट होता है एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। तो इसी को, ये वाले प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर को जनरली डिनोट किया जाता है के एन वैल्यू से, के एन। So if I put the value of Kn, then I can write the equation as ID equals to Kn W by L and VGS minus VTH into drain to source potential. Now what is this W by L? Generally this W by L जो होता है, this W is nothing but the width of the channel, the width of the channel, and width of the channel is denoted by W, and the length of the channel क्या होता है, ये कैपिटल L, एंड W बाई एल जो रेशियो होता है, W बाई एल का जो रेशियो, इसी W बाई एल रेशियो को मॉसफेट के लिए बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। दिस इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द NMOS। So it's generally a fabrication parameter, ये फैब्रिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये Kn और W बाई एल एक मॉस के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये वाले चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों को अगर एक साथ में लिख रहा हूं तो इसको बोलते हैं Kn dash। So we can write the ID equation as follows: ID is equals to Kn dash into VGS minus VTH into VDS. So this is the equation for the ID current in the triode region. So all these equations, जितने सारे equations यहाँ पे है, आपका ये important है for the numericals. So we can see that in the triode region, ID जो current होता है, drain current, that is a function of VGS as well as the VDS parameter. मतलब आईडी करंट आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपका ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करेंगे इन द ट्रायोड रीजन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू नोटिस हियर। लुक एट दिस आईडी करंट डिपेंड्स ऑन VGS, डिपेंड्स ऑन VGS also. So now let us see some parameters inside this triode region. So what are the parameters that we can derive for the NMOS transistor operating in the triode region? So now our topic will be the parameters in triode region. So triode region में parameters क्या होंगे? For triode region में parameter किसके लिए? NMOS transistor के लिए, because we are considering the NMOS transistor. Okay, so now the first parameter that comes into the mind is the drain to source resistance. So let us see the first parameter, that is the drain to source resistance. So what will be the drain to source resistance in the triode region of operation of a NMOS transistor? And this drain to source resistance is generally denoted as R
ds. This is the RDS. So this RDS value is nothing but, sometimes this is also called as the channel resistance also. Different types of name है इसका, channel resistance भी इसको कहा जाता है. So channel resistance का मतलब होता है drain to source resistance. It is denoted by RDS. Now RDS value जो होता है RDS, this RDS value is denoted by the drain to source potential divided by the ID. And इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होंगे ओहम. So this will be the value of the drain to source resistance. Now हम लोगों के पास ID का तो इक्वेशन पहले से है ट्रायोड रीजन में, ये वाला. So if we put that value, then what will be the value? So RDS यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा VDS होंगे, and ID का जो इक्वेशन था that was Kn dash VGS minus VTH into VDS. So this VDS and this VDS will cancel out. So ultimately we'll get 1 by Kn dash and VGS minus VTH. So this will give the value of drain to source resistance. So the channel resistance can be, आप देखिए जो चैनल का रेजिस्टेंस है, ये चैनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चैनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द गेट टू सोर्स वोल्टेज. That means in the triode region, if we want to change the channel resistance, then we have to change the VGS voltage. That's why MOSFET can be worked as a voltage variable resistor depending on the gate to source voltage in the triode region. What we have said. So since the RDS value is a function of gate to source voltage in the triode region. अभी हमने देखा. In the triode region of operation. So in the triode region of operation में मैं NMOS ट्रांजिस्टर को एक वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर के रूप में भी यूज कर सकता हूँ. डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ VGS चेंज करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, चैनल रेजिस्टेंस. दैट्स व्हाई द NMOS ट्रांजिस्टर can be operated as a voltage variable resistor in the triode region depending on the value of the gate voltage. This was the first parameter. Now let us see the second parameter. So second parameter जो आते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस के बाद और ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस के बाद, दैट इज द ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में आया हुआ है. सो ट्रांस कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय GM. सो व्हाट इज ट्रांस कंडक्टेंस? ट्रांस कंडक्टेंस का डेफिनेशन जो होता है, बाय डेफिनेशन GM is the ratio of the incremental change in the ID current due to the incremental change in the VGS voltage in when the VDS is fixed or constant. इसी को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस. So we know the value of ID. तो ID को मुझे VGS के डेरिवेटिव करना होंगे with respect to VGS. So if we do the derivative, so ID जो equation था, if you remember, the ID equation in the triode region was Kn dash into the gate to source potential minus the threshold voltage into the drain to source potential. So now if we do the derivative of ID with respect to the gate to source voltage, then it can be written as Kn dash, और VGS के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव करना है, तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएंगे आपका VDS. So we can say the GM value of a NMOS transistor inside the triode region of operation is denoted by Kn dash into gate to source voltage, drain to source voltage, and the unit of this transconductance
will be nothing but the mho. So this will give us the value of the transconductance in the triode region for a NMOS transistor. So we can see that the GM is a function of VDS only. Previously जो RDS था वो function of VGS था. So this is the difference you can see. So now if we want to go for the third parameter, the third parameter is also known as the output conductance. So what is output conductance? This is output conductance जो है ये output conductance को कभी कभी drain conductance भी बोला जाता है. Drain conductance is also called drain conductance, which is denoted by GD. So we have got this parameter. So what will be the value of this parameter? If we look on the value, so this GD value is nothing but the incremental change in the ID due to the incremental change in the drain to source potential when the gate to source potential is fixed, that is constant. This is the definition of the output conductance. So similarly we have to derivative the ID current equation with respect to the drain to source potential. So ID current का जो equation था ये वाला मेरा ID current का equation था. So इसको अगर del ID by del of VDS करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ ये होगा मेरा Kn dash और VGS माइनस VTH जैसा है वैसा ही रहेंगे और यहाँ पे VDS था उसके लिए आपको 1 हो जाएंगे. So we'll get a value of GD. So in this way we can find the output conductance value of the NMOS transistor in the triode region. So these are the three parameters that we can find for the case of triode region of operation in the NMOS transistor. Now ये था ट्रायोड रीजन. अब हम लोग को सैचुरेशन रीजन पे जाना है. तो सैचुरेशन रीजन कहाँ पे था? सैचुरेशन रीजन आप देखिए जब मेरा VDS का वैल्यू VDS सैट से ज्यादा होंगे तब मेरा इस सैचुरेशन रीजन में चले जाएंगे. सो दिस इज द सैचुरेशन रीजन. तो सैचुरेशन रीजन में मेरा कंडीशन क्या है? ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल को VDS सैचुरेशन से ज्यादा होना पड़ेगा. So for that purpose, let us write. Now we are moving for the saturation. So operation in saturation region. Saturation region. किसके लिए? NMOS transistor के लिए. NMOS transistor के लिए. So now we have moved to the saturation region. तो पहला जो है वो condition. इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके और कौन सा वाला कंडीशंस फॉलो होगा तो मेरा जो NMOS ट्रांजिस्टर है उस सैचुरेशन पे जाएंगे. अभी अभी हमने देखा कि if the drain to source potential is greater than or equals to the VDS saturation value, then it will go into the saturation. That means we can say that the VDS value should be greater than equals to VDS set का value तो मुझे मालूम है, that is nothing but the gate to source potential minus the threshold voltage. So now ये मेरा condition है. Another thing we know that this threshold value, ये जो threshold value है, ये threshold value का value very small होते हैं compared to the gate to source potential. So we can neglect that value. So if I neglect that value, then what will happen? The drain to source potential will be greater than or equals to the gate to source potential. That means the drain potential, the potential at the drain terminal should be greater than or equals to the gate potential. So this is the condition that must be followed by the NMOS transistor so that it can go into the saturation region. तो सैचुरेशन रीजन में जाने के लिए मेरा ड्रेन टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होना चाहिए
वो गेट के तरह होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और गेट से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो नाउ अभी सैचुरेशन रीजियन पे NMOS ट्रांजिस्टर चला गया because the drain potential has been greater than the gate potential ये कंडीशन पे। तो अगर सैचुरेशन रीजियन पे जाएंगे तो आईडी करंट का कुछ इक्वेशंस तो होंगे एट दैट केस। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ आईडी राइट नाउ? सो इफ वी गो फॉर द इक्वेशन ऑफ आईडी करंट इन द सैचुरेशन, द आईडी करंट इक्वेशन जो होते हैं, that ID current equation is generally written as half mu n COX W by L into VGS minus the threshold value whole square into 1 plus lambda VDS. So this is one of the most important equation you have to remember because इसका derivation है। So आपको derivations तो नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये वाला इक्वेशन चाहिए। एंड इन दिस इक्वेशन यू कैन सी देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स और वेरिएबल्स। ये म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल रेशियो जो होता है, ये तो हमने आपको मालूम ही होगा, अभी अभी मैंने डिस्कशन किया। और ये लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, व्हाट इज दिस लैम्डा वैल्यू? लैम्डा वैल्यू जो होता है, दिस लैम्डा वैल्यू इज नथिंग बट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। व्हाट इट इज कॉल्ड? It is called the channel length modulation parameter. This is called the channel length modulation parameter. The unit of this channel length modulation parameter is nothing but volt inverse. So ये channel length modulation जो पैरामीटर्स होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करके मेरा आईडी चेंज होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में आईडी लैम्डा का वैल्यू गिवन होता है, कभी कभी लैम्डा नहीं गिवन होता है। जब नहीं गिवन होंगे, आपको प्रोवाइडेड नहीं किया जाएगा, तब आपको लैम्डा का वैल्यू 0 पकड़ना होता है। So द लैम्डा वैल्यू if the lambda is not provided, क्वेश्चंस के बाद बोल रहा हूँ, if lambda is not provided then lambda value should be 0। तो लैम्डा को आपको 0 लेना है, नेग्लेक्ट करना है। तो आपका जो आईडी करंट का जो इक्वेशन होंगे सैचुरेशन रीजियन पे, तब आपका होगा हाफ mu n COX W by L VGS minus VTH whole square because lambda is 0 now. So in this case you can see we have got this constant। ये constant तो पहले मैंने डिफाइन किया था in the triode region, तो इसको मैं लिख सकता हूँ half into Kn dash and that is VGS minus VTH whole square. So we have got this equation. This is the current equation of ID when the NMOS transistor is operating in the saturation region and the channel length modulation parameter is 0. So now you can see this equation. So this equation is also important. This equation is also important when the channel length modulation parameter is 0. So we have got a value of ID and you can see that in the saturation region the ID current जो हो रहा है, this ID current is a function of VGS only। VDS के ऊपर कोई dependency नहीं है। That means it is, if we want to plot this equation then the plot will look like this कि यहाँ पे मेरा अगर ID current है, यहाँ पे मेरा अगर VGS value है, then we can write it as ये मेरा ID current and this is the VGS। तो इन द सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है कि ये जो सैचुरेशन रीजन में मेरा जो आईडी करंट है that is depending on the VGS only। So the curve will look like a parabolic plot। You can see it is a parabolic equation and this value
is the VTH. So this is happening for a particular value of VDS. This is happening for a particular value, for difference value of VGS we can say also. So ID increases as a parabolic variation or a quadratic variation with the VGS. And this is nothing but the transfer characteristics. So transfer characteristics are always plotted only for the saturation region. In the saturation region, ID is a function of VGS only. It is independent of the drain to source potential. That is the most important thing. Now, ये तो था मेरा ID current का equation in the saturation region. Now let us see some parameters for the ID current for the NMOS transistor operating in the saturation region. So what will be the parameters right now for the saturation region? So if we talk about the parameters, then the first parameters that we can say is the transconductance parameter, that is the GM parameter. So this GM equation क्या होता है? Transconductance parameter is nothing but the incremental change in the drain current due to the incremental change in the gate to source potential when the VDS value is fixed. ये हमने देखा था. So now आपके पास अभी ID current का equation है. So ID current का कौन सा equation है? Saturation region में. तो saturation region में जो ID current का equation होता है that is half n dash VGS minus threshold value whole square. Now if we derivative this ID current equation with respect to the VGS, then what will happen? यहाँ पे आपका half आ जाएंगे, यहाँ पे आपका kn dash और यहाँ पे आपका 2 आएगा due to this power and it will be VGS minus VTH. These two and these two will cancel out, so ultimately we'll get kn dash into VGS minus VTH. So this will give us the value of the transconductance parameters. Okay. So we have got the value of transconductance parameter in the saturation region and it is given by Kn dash VGS minus the threshold voltage. So from this equation we can calculate the value of the transconductance parameter in the saturation region. Similarly, for the second parameter, if we talk about, so that is nothing but the output conductance parameter. So let us say what will be the output conductance parameter. We have already seen that the output conductance parameter जो होते हैं, that is nothing but the incremental change in the ID due to the incremental change in the drain to source potential when the VGS value is constant. So now आपका जो ID करंट का इक्वेशन है इन द सैचुरेशन रीजन, इफ यू रिमेम्बर द फाइनल इक्वेशन, जो पहला वाला इक्वेशन था ID करंट का इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन के बाद बोल रहा है. सो ID करंट का जो इक्वेशन होंगे दैट इज हाफ इनटू, वी कैन से, वी कैन राइट इट एज Kn dash. So it will be VGS minus the threshold voltage whole square into 1 plus lambda into VDS. Now we have to derivative this ID current equation with respect to VDS. So if we derivative it, so क्या आएंगे यहाँ पे Kn dash और VGS minus VTH, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, होल स्क्वायर टर्म रह जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ आपको लैम्डा मिलेंगे. ओके, so now you can see that we have got this equation, but ये वाला जो पार्ट है, this part is nothing but this ID current equation जो पहले था. So we can write this equation approximately like this. This is ID into lambda. That means we can say that the output conductance in the saturation region for the NMOS transistor can be approximately written as ID into lambda. So this is the output conductance equation.
So in this way, we have got different parameters in the saturation region as well as in the triode region. We have seen the equations of the ID current, which is very important for the numericals. We have to use that current equations in the numericals for triode and the saturation region. So this is all about the equations that is needed for the NMOS transistor to operate in the triode region as well as in the saturation region. In the end, do not forget to like and subscribe our channel to get more videos. Thank you.